Hello students, I hope you all are doing great. I am Akanksha from SuperGrads. Now today again I have come up with an agenda to talk upon another entrance exam notification that has been recently released, which is Scholastic Admissions Test, which is SAT 2022. And since, as you already know, another way or entrance through which you can get admission into IIM Ranchi, apart from IPM aptitude test Indore, is SAT. And we are going to look into SAT and all the details and the registration process that we need to know about SAT. Now, students, before we begin with talking about SAT and its process, firstly, we need to get very clear that in this video, we'll be sticking solely to how IIM Ranchi accepts the score of SAT. तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी को टारगेट करेंगे एंड वील बी कनेक्टिंग आईआईएम रांची विद सैट. हम लोग सैट के जो बाकी के जो उसके फंक्शंस होते हैं और प्रोसेस होता है टू गेट एडमिशन इनटू द abroad universities and colleges, we will not look into those. We'll just stick to the IIM Ranchi process. So starting with, let us talk about a few little detail about what SAT is. So Scholastic Admission Test, as we all know, is an entrance test conducted 5 times in a year. 5 बारी ये एग्जाम्स कंडक्ट होता है और जो बॉडी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है वो है कॉलेज बोर्ड. नाउ कॉलेज बोर्ड इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. तो उसका जो बेस लोकेशन है इट इज न्यूयॉर्क यूएसए and it has another chain and its regional one of the regional offices is here in India as well, जो SAT conduct कराती है for Indian universities, one of which is IIM Ranchi. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 बार ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं. तो ट्रेडिशनली द पैटर्न इज दैट फर्स्ट एग्जाम इज conducted in March, then in May, then in August, उसके बाद October and then December. तो थ्रू आउट द ईयर ये 5 में डिवाइड हो जाता है इक्वली एंड देन इट इज कंडक्टेड एंड देर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन कि आप इतनी बार ही एंट्रेंस में बैठ सकते हो. यू कैन सिट फॉर एज मेनी एंट्रेंसेस एज यू विश टू. एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो देर आर टोटल ऑफ 73 सेंटर्स एज सिटीज जहां पे आप ये एग्जाम्स देने जा सकते हैं. एंड फर्दर वील मूव फॉरवर्ड फर्दर एंड वील लुक इनटू द होल प्रोसीजर कि कैसे आईआईएम रांची इसका स्कोर एक्सेप्ट करता है. उससे पहले स्टूडेंट्स वी नीड टू नो कि आईआईएम रांची या फिर फॉर दैट मैटर एनी इंस्टीट्यूट एक अलॉटेड कोड होता है सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का. Which code is here in this case very important to remember for IIM Ranchi, जैसा कि you can see 9109, which we as students we are supposed to send this code when we are appearing for SAT through college board. ये हमको fill करना होता है so that we can intimate college board कि this is the university and this is its code जो हमको इस कॉलेज में एडमिशन देगा. सो यू जस्ट हैव टू फॉर नाउ we'll move further and we'll definitely talk about it more, but for now you have to remember कि IIM Ranchi का कोड है 9109. So guys, now let's talk about more that how SAT scores are accepted by IIM Ranchi for integrated program in management. एंड स्टार्टिंग विद कैसी प्रोसेस होती है, दोनों की सेपरेट होती है, एक होती है, कैसे हम सेंड करेंगे. सो स्टूडेंट्स यस, दोनों के लिए हम लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग होगा. वी विल हैव टू फिल द सेपरेट फॉर्म्स बोथ फॉर सैट ऑल्सो एंड फॉर आईआईएम रांची ऑल्सो. तो सबसे पहला प्रोसेस होगा, we will go to the college board website, we will fill the SAT application form and while appearing for SAT आपको हमेशा एक ऑप्शन दिखेगा उस वेबसाइट पे wherein they ask about which university do you want to send your scores to, and
There you have to choose IIM Ranchi as your institute and its code, which I just mentioned, which is 9109. ये आपको mention करना पड़ेगा so that college board can send the scores to that particular institute, which is IIM Ranchi. तो when you will choose the option, आपने अपना पूरा फॉर्म भरा जिसका प्रोसेस हम आगे देखेंगे. फॉर्म भरने के बाद you attempted the entrance exam of SAT, and when the results will come out, कॉलेज बोर्ड वो जो स्कोर्स हैं आपका, दे विल सेंड इट टू आईआईएम रांची. उसके बाद आपका वहां रोल सैट के बाद इट विल बी फिनिश्ड. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी आईआईएम रांची का एप्लीकेशन प्रोसेस. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, सैट और कॉलेज बोर्ड हैज ऑलरेडी सेंड द स्कोर्स टू आईआईएम रांची. जब आप एग्जाम देने के बाद आईआईएम रांची का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, they will only accept your application form once they realize that they have received your scores from the college board. आसान भाषा में अगर हम बोले तो आईआईएम रांची में जब भी आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, which is again will be a very separate process from that of the scholastic admission test application process. तो जब भी आप आईआईएम के लिए फिल करोगे तो वो तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेगा आईआईएम रांची, जब उनके पास आपके स्कोर्स कॉलेज बोर्ड से पहुंच जाएंगे सैट एंट्रेंस टेस्ट के. अदरवाइज योर फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय आईआईएम रांची. तो आई होप आप क्लियर हैं. दोनों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग है. सैट भरेंगे, सैट का एग्जाम देंगे, उसका स्कोर्स, उसका अपीयर करते टाइम हम अपना इंस्टीट्यूट चूज करेंगे कि कहाँ हमें ये स्कोर सेंड करने हैं. आईआईएम रांची चूज करेंगे, उसका कोड डालेंगे. नेक्स्ट रिजल्ट आने के बाद हम आईआईएम रांची की वेबसाइट पे जाएंगे, आईआईएम रांची का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और आईआईएम रांची तभी आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करेगा जब उसे कॉलेज बोर्ड से आपके सैट का स्कोर मिलेगा. So I hope I am clear with this, and this is the only way wherein you have to be very careful. You have to make sure that you are fully aware about all the information of SAT as well as of IIM Ranchi. Now, guys, let's move forward and look into the dates and deadlines of Scholastic Admission Test 2022. As you can see on my background, so March 12th is when our registration process, sorry, not registration process, but March 12th is the first entrance test will be conducted by College Board of SAT, and there are 3 definite dates that has been released by College Board for SAT, which is March 12th, the first entrance, May 7th, the second, and third is June 4th. ये तीनों हमारे definite dates हैं entrances के, and in this column, as you can see, is the last date to fill the form of the respective entrances. So if you want to fill for March 12th, then the last date is February 11th. For May 7th, the last date to fill the form is April 8th, and June 4th, the last date to fill the form is May 5th. In तीनों entrances की registration is available to you on the official website of College Board. So whoever wants to give and whoever wants to get admission in IIM Ranchi through SAT, इन तीनों में से जो भी feasible लगता है, fill the form today. And if we move forward and talk about the tentative dates of the later in 2022, then these are the speculated or anticipated dates. August, October, November, December, and these last 3 are obviously for 2023. So these are speculated or anticipated, but then the previous 3 dates are definite. So make sure you are filling the form. Now, guys, थोड़ा सा हम IIM Ranchi की eligibility criteria को भी देख लेते हैं. We won't talk about the SAT eligibility criteria because College Board does not release the exact eligibility criteria क्योंकि है ही नहीं. So there are no specifics given by or released by the College Board. But then for IIM Ranchi,
there are few couple of eligibility criteria which you have to be clear in. Starting with first, obviously, you have to pass your 10th with there is no minimum aggregate percentage, but then passing the 10th is necessary. And if we move forward, 12th आप लोगों को pass करना again is necessary. For general, you need minimum aggregate 60% in your 12th to sit for to get admission into IIM. And for reservation categories like SC ST, 55% is required to get admission into IIM Ranchi. और अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो IIM Ranchi also does not have any specific age limit. So anybody who wants to sit or who wants to get admission can give admission, given that you have minimum 60% in your 12th for general and 55 if you are from SC ST category. Now, guys, let's move forward and look into the SAT structure, the SAT exam pattern. So SAT basically is based upon three major components, yeah, three major sections which we are required to excel in or which were required to pass in. And these three main areas are first, as you can see, the reading test. Now, reading test is basically the reading comprehensions or the passages for that matter, jo bhi convenient lage, whatever you call it, reading comprehensions or the passages which you usually get in your English section, but rest of the section will be excluded like grammar and vocabulary. यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस ही मिलेंगे जिसमें ऑब्वियसली यू विल बी गिवन अ पैसेज, उसके बेसिस पे यू विल बी गिवन फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्व करने पड़ेंगे. नेक्स्ट मेन सेक्शन इज द सेकेंड सेक्शन इज द राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट. नाउ हियर कम्स the grammar portion, the incorrect portion which is to be highlighted and which is to be found out. तो इसमें भी आप लोगों को passages दिए होंगे and that passages will contain few incorrect statements, incorrect words, incorrect grammar which you will need to fix in the given options. So this is the second section. Last is the math test. Now math test again gets divided into two main sections. एक सेक्शन में यू विल बी अलाउड टू यूज योर कैलकुलेटर जिसका ऑब्वियसली एंड नेचुरली लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा एंड द सेकेंड पार्ट विल बी वेयर देर इज नो कैलकुलेटर अलाउड. तो इट विल बी रिलेटिवली इजियर. सो दोनों एक बराबर गैप में या फिर ब्रेक के बाद होंगे and after every section you will be given a few minutes of break and same for the maths also. दोनों non calculator और calculator के बीच में you will be given few minutes of break. Now if we talk about maths में चार basically areas में divided होता है पूरा maths का test, be it calculator or non calculator. First is your heart of algebra wherein you get linear equations and the type of questions under that. Second is प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिटिक्स जो आपके क्वांटिटेटिव लिटरेसी चेक करता है, टेस्ट करता है. थर्ड इज पासपोर्ट टू एडवांस मैथ्स. इसमें थोड़ी सी हायर लेवल की मैथ्स आती है and where there are multiple questions manipulated and you have to correct them. Lastly, there are few additional topics like geometry and trigonometry. So these are the topics which comes under maths. And if we talk about the time limit, as you can see, the time allotted to the sections are 65 minutes to reading section, 35 minutes to writing and language section, and 80 total minutes to maths, including both calculator and non-calculator maths, and including the break time, excluding the break time, आपको कुछ मिनट का ब्रेक मिलता है and वो डिवाइड हो जाता है इक्वली विद इन नॉन मैथ्स एंड नॉन कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर मैथ्स टेस्ट. सो गाइस थोड़ा सा हम लोग मैथ्स टेस्ट के ऊपर ज्यादा बात करते हैं बिकॉज देर आर लाइक रेपिटेटिव क्वेश्चंस ऑफ व्हाट कम्स इन मैथ्स, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन. कैलकुलेटर नॉन कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं या नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं. तो लेट्स टॉक मोर अबाउट द मैथ्स सेक्शन. नाउ हियर यू कैन सी आई हैव डिवाइडेड दीज two sections.
no calculator and calculator one. So the total time allotted to the no calculator maths is 25 minutes. आपको total questions 20 दिए जाते हैं which you have to solve within 25 minutes. Multiple choice questions भी होते हैं और grid in questions भी होते हैं. I'll talk about grid in questions, what are grid in questions, but then before that, multiple choice questions आपकी 15 होते हैं and grid in questions you get 5. Likewise, if we talk about the calculation portion or the calculator allowed maths test, the time allotted here is 55 minutes. Total questions which you get in here is 38 questions. Multiple choice questions again यहाँ पे 30 होते हैं and grid questions होते हैं 8, which makes total of 38. Now, as you already ascertained, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, MCQ and grid in. MCQ, as we all know, we get a statement and wherein we get the follow up options जिसमें से हमें एक चूज करना होता है. अगर हम ग्रिड इन की बात करें, if we talk about the grid in questions, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, उसका ऑपोजिट, MCQ का ऑपोजिट, नो ऑप्शंस आर गिवन एंड इसके अलावा ऑप्शंस की जगह आप लोगों को एक शीट दी जाती है जिसको बोलते हैं बबल शीट. दैट बबल शीट यू हैव टू फिल इज गिवन फॉर यू टू फिल द आंसर्स. तो मान लीजिए 2 + 2 200 + 200 फॉर दैट मैटर, 200 + 200 अगर आपको क्वेश्चन पूछा है, आई नो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल, यू विल गेट अ लॉट comparatively higher level of maths in your grid in question, but then just for the sake of example, if the question is asked 200, what is 200 + 200, so the answer comes 400, तो आपको उन bubbles में the sheet which you will be given उसमें वो सारे एक एक करके, जैसे 3 digits में आपका आंसर आया है 400, तो in one bubble you will write 4, the other bubble you will write 0, and then the other bubble we will write 0. तो ऐसे bubbles होते हैं circular, उस शीट को आपको फिल करना होता है with your answers. उसमें आपके fractions भी आ जाते हैं, fractions के फॉर्म में भी होता है, decimals के फॉर्म में भी होता है, तो the sheet is explanatory in itself. So these are the two types of major questions that you get in maths test, including both calculator allowed portion and non-calculator portion. Now guys, let's hop on to the most important and the crucial part, which is the registration process of scholastic admission test. Starting with, here is in the top given the official website of college board through which you will be headed to your SAT registration, which I talked earlier about, all the dates and deadlines. And when you will click on to the registered part, this will occur, and here you will have to go to create account because college board ka account is necessary for you to move forward to fill the form. Create account आप करेंगे, तो this will come where you have to choose I am a student, obviously. And when you choose this, we will move forward to the further registration process. So here will be the first step, जहाँ पे आपको अपनी जनरल इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, first name, middle name, last name, gender, date of birth, etc. And the second step is here the personal information. So here, as you can see, students, there are two portions given. एक चूज करना है आपको, as I mentioned that it is an international level entrance test. तो यहाँ पे first option है if you are a US citizen and here outside US. So we have to obviously go for outside the US as we have to give the scores to IIM Ranchi. We are Indians, तो हम लोग outside the US fill करेंगे. We'll put all the basic details of our address here, and then we will move forward. This will occur, and आपको फिर से अपना verify और confirm करना पड़ेगा. Whatever you have given the information to the college board, you will have to confirm your first name, last name, gender, and date of birth, right? And you can also edit. There is an option of editing if you have done any mistake. आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ छूट गया है या कुछ incorrect हो गया है, so you can edit it and then again come back to confirming the information. So once you are done with your confirming, you will move forward by clicking on to confirm,
and this window will be in front of you. So here आप लोगों को तीन तरीके से you will move forward, right? So update personal information, जो भी आपने भरा है, again you have to oversee it and fill a few more personal information. Create student profile wherein you will be providing your mark sheets, details about the 10th and 12th marks, scores, etc. Select test and center, very important. Make sure कि आप जो भी आपका nearest city है वो fill कर रहे हो to give and go to that center. Fourth step will be to upload your picture. Make sure आपके picture भी recent होने चाहिए and pixel सही होने चाहिए. Make sure कि क्योंकि इसके guidelines और criteria थोड़े अलग हो सकते हैं because it is an international level entrance. So make sure everything is very correct. And last option is the checkout, wherein we'll be filling with the application fees. And let's talk more about the registration fees. So here is the whole bifurcation of how the fees has been divided. So if we talk about the whole fee of the application, it is 7,700 for Indians. So we Indians, वैसे basically it is $104, which makes 7,700 rupees. And it's again like further gets bifurcated into it includes the regional fees, the registration charges, and regional fees for India. So ये तीनों चीजें मिलाकर के 7,700 rupees fees बनती है for filling the SAT registration form. Now, one more interesting thing which you all might not be aware of is the discount or the scholarship which College Board provides on the SAT registration form. Yes. तो कॉलेज बोर्ड रजिस्ट्रेशन पे भी थोड़ा सा वेव ऑफ करता है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही वेव ऑफ करता है फॉर द स्टूडेंट्स जिनके लिए 7,700 रुपीज थोड़े से ज्यादा हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस. सो एज यू कैन सी, जिनकी भी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उनको 90% सैट रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट मिलेगा. 90% वेव ऑफ टू द होल SAT registration fees, that is 7,700. And second is, जिनकी भी annual family income is between 8 lakhs to 15 lakhs, उनको 50% का waive off मिलेगा. So I hope you're clear. जिनकी भी family income, annual income is less than 8 lakhs, they will get 90% discount on the registration fees on 7,700, and whoever's family annual income is between 8 lakhs to 15 lakhs will get 50% of the waive off, 50% waive off to 7,700 registration fees. Now, lastly, this was all from my side. This was all the basic and important details that you all needed to know. Please make sure that you are very much well informed and very much clear with how to fill SAT separately and how to fill for IIM post giving and filling for SAT, right? IIM Ranchi. दोनों के filling registration filling process अलग-अलग है. Make sure you are very much clear with this. And if again you have any queries, you feel stuck at any point, you can always contact us and connect with us via these information. And all the very best for your exams. Thank you. Bye-bye.